Sanjeet Viswas coming live, and today we are going to talk about a very interesting topic on options, and the topic is about straddles and strangles. So, before I start any further, just let me put across some points. For the benefit of our audience, we will keep the mode of delivery in English and Hindi both, so that everybody can understand and there is no confusion. Second, in case if you are going to have some issue with the quality of the video, then maybe you can just switch into a higher resolution from your settings. So I think in most of the cases that should get rid of the issues. So without any further ado, let's start. So can we have the slides, please? Okay, great. So as I said, basically straddles and strangles is what we are going to talk about today. So now, what exactly are straddles and strangles? Straddle or strangle क्या है? So basically, these are very simple option strategies which are generally market neutral in nature. I mean, they are actually market neutral in nature, and they are based on either volatility expansion or contraction. मतलब ये है कि ये straddle strangles एक range bound या range expansion के लिए हम depending on the view हम use करते हैं. इसमें मार्केट का ध्यान जनरली न्यूट्रल रहता है. अगर हमको ये लगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर हमको ये मालूम हो, तो फिर हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जैसे बेयर कॉल स्प्रेड या बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड, व्हाटएवर. सो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर सेशंस. बट जहां पे अगर हमको मान लीजिए अगर डायरेक्शन के ऊपर में लगता है कि इट इज गोइंग टू बी अ रेंज बाउंड, तो वहां पे हम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल यूज करते हैं. या अगर हमको लगता है कि कोई न्यूज है या कोई इवेंट है और वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होगी और मार्केट किधर भी एक लंबा मूव दे सकता है, तो वो सिचुएशंस में वी यूज दिस स्ट्रेटजी. सो ये एक नक्शल में था. सो थोड़ा सा डिटेल में अगर समझें, सो बेसिकली दीज स्ट्रेटजीज आर two leg strategies. I mean, these straddles and strangles, they sound similar and they are actually very similar in nature also. So इसमें please don't worry that in case if you are getting confused, you will understand I think by the end of the session. So anyway, so basically ये दोनों strategies, they are two leg strategies. इसमें call and put दोनों हम या तो buy करते हैं या तो sell करते हैं, right? So अगर हम कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो पुट ऑप्शन भी खरीदेंगे. अगर हमको लगता है कि मार्केट लंबा कोई भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है या गिर सकता है, और अगर हमको लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, सो वी कैन सेल बोथ द ऑप्शंस, बोथ द कॉल्स एंड पुट्स. स्ट्राइक प्राइस इज व्हाट डिसाइड्स और डिफरेंशिएट्स वेदर इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ स्ट्रैडल और अ स्ट्रैंगल, राइट? इसके अलावा और क्या पॉइंट है? अंडरलाइन. सो ऑब्वियसली when I say the call and the put, obviously they have to be of the same underlying. Underlying different नहीं हो सकता है, underlying same ही रहेगा. Even जो आपका expiry है, the expiry that you choose for the options, they have to be the same. They cannot be of different expiries, right? View, as I said, these are generally non-directional in nature, so they are like neutral. And if I am expecting an expansion in volatility, so that is why that is when I go long on the straddle or the strangle. But if I feel that it's going to be a range bound move and there is a chance of a volatility contraction, IV's implied volatility of the options is going to come down and market is not going to go anywhere. Market किधर भी नहीं जाएगा, थीटा डीके होगा, ऑप्शंस के भाव जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ नीचे आएंगे, तो वो केस में फिर हम शॉर्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं. तो ये एक बेसिक नक्शल में एक डेफिनेशन लेवल पे था. सो यस, कमिंग बैक टू दिस टुडेस टॉपिक. सो हम लॉन्ग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के बारे में पहले समझेंगे, देन वी विल गो टू द शॉर्ट साइड ऑफ द स्ट्रेटजीज. सो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ लॉन्ग स्ट्रैडल? सो इट इज the simplest of the strategies, I would say, from conceptual understanding perspective. इसमें what happens is that आप दो ऑप्शन लेते हैं, एक कॉल और एक पुट. बट दोनों ऑप्शन जो है ना, वो आपके एटीएम होने चाहिए, एट द मनी होने चाहिए. सो द ऑप्शंस हैव टू बी एटीएम ऑप्शंस. वन कॉल ऑप्शन, द अदर इज द पुट ऑप्शन.
Now what you do is you basically buy these two options. So again, as I said, like why will you buy? You buy because you really are not sure which way market will go. So what you do is you buy both the options. आप दोनों ऑप्शन खरीद लेते हैं, कॉल एंड पुट दोनों, राइट. सो इसमें आपका बेट ये है कि मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाए, इफ देयर इज अ मूवमेंट बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, देन आई विल बी प्रॉफिटेबल, राइट. तो इसमें how it goes is, as you can see on the screen, I mean on the right hand side there is a payoff diagram as well. So agar spot मेरा जो भी चल रहा है, I'll buy one lot of the call option, the ATM call option and the ATM put option. Now what is going to be my break even? So break even matlab the point where I'm going to be profitable, above or below which I'm going to be profitable. So first of all, this strategy has two break even points, one on the higher side, one on the lower side, right? So how is it calculated? It is very simple. Whatever premium I'm paying, because I'm buying both the options, I'm buying both the calls and the puts. So whatever premium I'm paying, that is what is supposed to be added to the strike price. So for example, if I'm buying an option of let's say the option strike price is 100, okay, and the underlying asset is also trading at 100. So I buy the 100 rupee call and put together. Now let's say the 100 rupee call is trading at 4 rupees and the put option is trading at 4.5. Okay. So I end up paying 8.5 rupees. 4 plus 4.5 is what I'm paying, correct? For both the calls and put. Now, how is my break even going to be calculated? This 8.5 rupees that I have paid, that is my outflow, correct? So that is supposed to be added to the strike price. So my break-even point will be 100, which is the strike price, plus that 8.5 rupees that I have paid. So the upper break-even point will be 108.5, and the lower break-even point will be how much? 91.5, right? So effectively हम जितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, हमको उस प्रीमियम को हमारे स्ट्राइक प्राइस से ऐड कर देना है और सब्सट्रैक्ट कर देना है. तो दैट विल गिव मी द ब्रेक इवन पॉइंट. जैसे ही हम अपने प्रीमियम आउटफ्लो को स्ट्राइक प्राइस से ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमको दोनों साइड का ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा. ये सिंपल है. ऑब्वियसली हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे इसके बाद थोड़ा सा, बट अभी थोड़ा सा डेफिनेशन लेवल पे हम समझ लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देखें, जैसे कि मैंने बताया, आउटलुक ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, आउटलुक इज न्यूट्रल. ठीक है ना, मतलब मार्केट का वी डोंट हैव अ व्यू. द ओनली व्यू इज दैट मार्केट माइट गो इन एनी डायरेक्शन एंड द मूव कैन बी बिग, राइट, एंड देयर इज अ chance of an expansion in volatility. The range will move by a huge margin, and this sort of a situation can come before any event, right? Or any suddenly, if let's say there is a technical breakout event. So this sort of strategies we can use when we feel that there is going to be a big move in either of the direction. तो practically अगर आप देखें तो जनरली हम कैसे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अगर कोई स्टॉक सपोर्ट के पास है, तो सपोर्ट से देखिए दो ही चीज हो सकती है. आइदर द स्टॉक विल रिवर्स, सीधा सपोर्ट से बाउंस लेके ऊपर चला जाएगा, और वो अगर एक बड़े रेंज के अंदर में है, सो इफ द रेंज इज बिग, तो वो सपोर्ट से अगर बाई चांस अगर घूम गया, सो द मूवमेंट ऑन द हायर साइड विल बी कुड बी बिग, राइट. तो वहां से भी एक बड़ा मूव आ सकता है. या अगर वो सपोर्ट उसने तोड़ दिया, एक बड़े रेंज का अगर सपोर्ट अगर वो स्टॉक तोड़ रहा है, सो उसका मतलब ये भी है कि आने वाले दिनों में वो स्टॉक बहुत रैपिडली नीचे भी जा सकता है और बहुत लंबा जा सकता है, करेक्ट. सो अगर मान लीजिए कोई रेंज से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पे जहां पे स्टॉक ब्रेकआउट देगा कि नहीं देगा, वी आर नॉट श्योर, तो वो पॉइंट पे हम इस टाइप के स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं. सो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन, राइट. सपोर्ट से भी इवन इफ इट बाउंसेस, सो मेरा कॉल मेरे को पैसा दे देगा, the put option obviously will become zero, or maybe it will not give me any money and it will go down, but the call option will surpass or rather compensate much more than the loss that I will suffer on the put option. So इस तरीके का concept है. So premium obviously it is an outflow.
हम प्रीमियम पे करते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट इस टाइप के स्ट्रैटेजी में थियोरेटिकली अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर आज मान लीजिए एक स्टॉक अगर बढ़ना चालू किया, सो मतलब इट कैन मूव बाय अ ह्यूज मार्जिन, राइट? सो प्रैक्टिकली इट इज, यू कैन से द प्रॉफिट्स आर अनलिमिटेड। मैक्सिमम लॉस ये स्ट्रैटेजी में पूरा डिफाइंड होता है, एंड इट इज जस्ट लाइक एनी अदर सिंपल वनीला कॉल ऑप्शन लॉन्ग और पुट ऑप्शन लॉन्ग। यहाँ पे भी माई लॉस इज कैप्ड एंड इट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रीमियम दैट आई हैव पेड। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने 8 रुपए अगर पे किया, 8.5 रुपए, यू नो दैट कॉल पुट जो एग्जांपल मैं दे रहा था, सो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस वो 8.5 रुपए ही है, जो कॉल और पुट के प्राइस को ऐड करके बन रहा है। ब्रेक इवन, जैसे कि मैंने बताया, लोअर ब्रेक इवन को कैलकुलेट करने के लिए आप जो आपका स्ट्राइक प्राइस है उससे आप आउटफ्लो को माइनस करेंगे, और अपर ब्रेक इवन को निकालने के लिए आप हायर स्ट्राइक प्राइस, आई मीन स्ट्राइक प्राइस से आप आउटफ्लो को ऐड कर देंगे। मार्जिन ऑब्वियसली, क्योंकि आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं, सो इसमें आपको बस खाली प्रीमियम ही पे करना होता है, देयर इज नथिंग। नाउ इन टर्म्स ऑफ द ग्रीक्स, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट हाउ दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बिहेव, सो इन टर्म्स ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, जब हम इनिशिएट करते हैं उस टाइम पे इसका डेल्टा न्यूट्रल रहता है, क्योंकि हम कॉल और पुट, मान लीजिए अगर एटीएम कॉल पुट खरीद रहे हैं, सो बोथ द ऑप्शंस दे हैव अ डेल्टा ऑफ 0.5 एंड -0.5, लाइक 0.5 फॉर द कॉल ऑप्शन एंड -0.5 फॉर द पुट ऑप्शन, more or less. So if I buy both, so my effective delta is going to be 0, correct? But obviously जैसे जैसे the stock moves, like as in when the stock starts to go up or down, the delta will be, you know, it will keep on changing, so that will, you know, that actually will, you know, lead me to a profit, correct? So net when I initiate, my delta is neutral, and in this case my theta is negative, which means as and when the day passes, हमारा ऑप्शन प्रीमियम डीके होगा, सो वी विल लूज ऑन द थीटा डीके टाइम वैल्यू, राइट? सो वो हमारे अगेंस्ट में होगा। सो थीटा नेगेटिव मतलब सिंपल है कि हम, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग कर रहे हैं, तो टाइम हमारे अगेंस्ट में है। तीसरा क्या है? वॉलेटिलिटी। सो वॉलेटिलिटी इज इन आवर फेवर, ठीक है? सो यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाए, जैसे आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जानते हैं, तो अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर बढ़ जाए, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर मार्केट अचानक से गिरना चालू करे, सो सडनली यू विल सी दैट द ऑप्शन प्राइसेस हैव बिकम मोर प्राइसियर, मोर कॉस्टली, करेक्ट? सो वो इसलिए होता है क्योंकि उसका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ गया हुआ होता है। सो इफ देयर इज एन like a situation where market is going down or the stock is like going down, तो उसमें आपको दो बेनिफिट मिलेगा। एक तो आप डेफिनेटली वो पुट ऑप्शन आपको पैसा दे रहा होगा, राइट? बट इससे और एक ये भी है कि आपको वॉलेटिलिटी विच इज वीगा, सो वीगा से भी आपको गेन आएगा, क्योंकि चांसेस यही होता है कि अगर स्टॉक क्रैश हो रहा है तो उसमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी तो बढ़नी है, राइट? सो वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू बी माय फ्रेंड इन दिस केस। So this was about long straddle. So if you have understood this well, then the rest of the three things like long strangle and short straddle and short straddles, they are going to be the same. I mean, very similar in nature, and they will be very easy to understand. So now let's go to the long strangle. So straddle is like जहाँ पे I'm using a single strike price, the same strike price, ठीक है? So I'm like, it's like a tight one, straddle. And strangle is like strangulating, you know, expanding. So in this case, it is very similar to the straddle. The only difference is कि यहाँ पे हम same strike price का call put नहीं खरीदते, दो अलग अलग strike price का call खरीद लेते हैं। एक out of the money call खरीदते हैं और एक out of the money put खरीदते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रीमियम आउटफ्लो है, जाहिर सी बात है कि अगर हम एटीएम ऑप्शन खरीद रहे हैं तो प्रीमियम नेचुरली थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, और वहीं पे अगर हम थोड़ा आउट ऑफ द मनी चले जाएं, सो आवर प्रीमियम्स विल बी स्लाइटली लेसर, राइट? तो इस वजह से क्या है कि इफ यू फील दैट मूव तो बड़ा आ जाएगा, मूव तो लंबा आना है, बट एक्चुअली जो एटीएम ऑप्शन के प्राइसेस हैं, सो दे सीम टू बी too much, and I am not going to put that much money into risk, because whatever money you are putting is, that is, you have to assume that that's your total risk amount. तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रीमियम थोड़े ज्यादा है, एटीएम ऑप्शन हम नहीं खरीदना चाहते हैं, सो मे बी आई विल गो फॉर एन ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, जहां पे हम एक ओटीएम कॉल खरीदे और ओटीएम पुट खरीदे, तो इससे हमारा कॉस्टिंग कम हो जाता है। बाकी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थीमेटिकली इट इज वेरी सेम, राइट? सो अपर ब्रेक इवन भी कैसे कैलकुलेट होगा? जो आपका कॉल का स्ट्राइक प्राइस है
वहां से आप आउटफ्लो को ऐड कर देंगे, लोअर ब्रेक इवन के लिए यू subtract the outflow from the strike price of the put option. So in the earlier example, like where I was talking about a stock which is at 100 and I bought the call and put at 4 and 4.5. Now let's say instead of buying the 100 rupee call and put, I don't want to buy the 100 rupee call and put at 8.5. I don't want to do the straddle at 8.5. I want to rather minimize my cost, reduce my cost while buying a, let's say, 102 call option and a 98 rupee put option. So instead of buying 100 call, I will buy 102, which is an OTM call. Instead of buying the 100 put, I will go slightly lower and come down to the 98 put option. Now in this case, generally you have to keep in mind that wherever your spot price is, आपका जहां पे अभी spot price चल रहा है, उससे आप call और put का जो है ना distance, it has to be same. Because if you are not keeping the distance equal, then you will have a net delta. आपका एक bias आ जाएगा फिर, करेक्ट. अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने खरीदने के टाइम पे कॉल खरीदने के टाइम पे 102 का तो कॉल खरीद लिया, राइट, बट पुट इंस्टेड ऑफ द 98 rupee put I bought 90 rupee put option. So in that case what will happen is that of course I will be paying a lesser money for the 90 rupee put option as compared to the 98 put option, but there will be an effectively net long in delta because I bought the call option maybe at a 0.4 delta, right, but I am buying a put option of a 0.1 delta, so effectively there will be a +3 point delta, correct. So आपका effectively एक position में bias आ सकता है. So that's why it is advisable that if you really feel that it's going to be whichever way, and I don't know which way, so in that case it is advisable that you buy equal distances from the spot price. Okay, so how does it look like? It is very similar in terms of its I would say risk profile and behavior, and the Greeks, they are very similar. And so in this, what I want to also like further discuss is that in this case, see, if there is a move as per your expectation, let's say you thought that there will be a big move in the market and it happened like that. मार्केट में आपने सोचा मार्केट क्रैश कर जाएगा और सही में गिर गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए. हाँ, या ऊपर में आपने सोचा ब्रेकआउट आएगा और लंबा ब्रेकआउट चल गया, तो इन बोथ द केसेस यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज इन बोथ द केसेस आपके ऑप्शन के प्राइस एक ना एक, either the call or the put will give you money. The problem is that when it doesn't happen, then how do you manage your risk? Do you really wait for something to happen, or what do you do? आप क्या करेंगे? जैसे स्टॉप लॉस. सो इसमें एक बात यह है कि स्ट्रैटेजी में बाय डिफॉल्ट आपका एक स्टॉप लॉस तो है, जो कि आपने जो प्रीमियम दिया है आप उससे ज्यादा तो लॉस नहीं ले सकते हो, करेक्ट है ना, आप उससे ज्यादा तो लॉस नहीं ले सकते हो, मतलब होगा नहीं. सो दैट इज अ हार्ड स्टॉप लॉस दैट यू हैव. बट स्टिल लेट्स से इफ यू वांट टू कीप अ स्मॉलर स्टॉप लॉस, तो उसमें देन आई वुड से देन यू हैव टू टेक अ बेट ऑन अदर थिंग्स. आप ये ऑप्शन के प्राइस आपने स्ट्रैटेजी तो बना लिया, you just got into the strategy. Now the reason for which you felt that there is going to be a breakout, right, so you had a reason to build this strategy or to do this strategy. So in case if you feel that the reason for which you initiated the strategy is not holding any further, then you got to maybe consider an exit as well. You really don't have to wait for both the call and put to become zero, correct. So, or maybe like they can just do nothing and you can end up into a big loss. I mean, up to the expiry. So, what I'm saying is कि अगर आपको लगता है कि ये वजह से मैंने ये straddle को लॉन्ग किया था या इस ट्रायंगल को लॉन्ग किया था और वो कारण अभी वैलिड नहीं लग रहा है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं सपोर्ट के पास में अगर आके लेता हूं तो वहां से दो चीज हो सकता है. आइदर द सपोर्ट विल ब्रेक and the stock will go down big way, लंबा जाएगा नीचे, या तो वो सपोर्ट से अगर घूम गया तो मेरे को लगता है कि ये लंबा घूम सकता है, ठीक है ना. तो अगर ये चीज नहीं हुआ तो इसका एक मेरे पास में रीजन है कि मैंने ये स्ट्रैटेजी क्यों इनिशिएट किया. तो जब मेरे को अगर ये लगे कि नहीं, जो मैंने सोचा कि ये सपोर्ट है और यहाँ से एक लंबा आइदर वे मूवमेंट आएगा, वैसे कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं
और वो स्टॉक जो है वो सपोर्ट से आगे पीछे हो रहा है, यू नो, इट्स नॉट मूविंग और बिहेविंग द वे एक सपोर्ट तोड़ने के बाद में जैसे होना चाहिए, या सपोर्ट से घूमने का जैसे वी शेप रिकवरी आती है, वैसा दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो साधारण भाषा में अगर इफ यू हैव टू से, अगर अंडरलाइन का बिहेवियर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर नहीं चल रहा है, तो देन हम स्टॉप लॉस को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन एग्जिटिंग द स्ट्रैटेजी अर्ली। ओके, नाउ what is next? So in the next slide we have short straddle. So short straddle is just the opposite of long straddle, in the sense that in a long straddle we were buying the options, right? We were buying the ATM options, both the calls and put. Now the guy who is, you know, against you, so he's actually doing the short straddle. So सामने में अगर हम कॉल पुट खरीद रहे तो वो हमारे लिए लॉन्ग स्ट्रैडल हो रहा था, अगर हम खरीदने के बजाय अगर हम उसको बेच दें तो वही शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया। तो इसमें व्यू क्या होगा, इसका ऑपोजिट ही होना है। तो यहाँ पे हम एटीएम कॉल और पुट दोनों बेच रहे हैं, हमारा व्यू ये है कि कहीं पे भी शायद नहीं जाने वाला है। सो इन सच ए सिनेरियो इट इज लाइक, यू नो, यू फील कि मार्केट में बहुत डाउनसाइड भी नहीं है, अपसाइड भी नहीं है, और ये जो ऑप्शन के प्रीमियम हमको मिल रहे हैं दैट इज गुड एनफ टू कवर वॉट एवर रेंज यू नो आई एम एक्सपेक्टिंग, राइट। मेरे ब्रेक इवन जो बन रहे हैं, बिकॉज इन दिस केस आई एम गोइंग टू बी रिसीविंग प्रीमियम, यहाँ पे हमको प्रीमियम रिसीव होगा। सो अगर मैंने सफिशिएंट प्रीमियम रिसीव कर लिया है और मेरे को लगता है कि जितना प्रीमियम मैंने रिसीव किया वो कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे ब्रेक इवन भी इतने वाइड हैं जहां पे मेरे को आई एम हैप्पी दैट हाँ मार्केट इसके बाहर नहीं जा सकता है। So if that is the view, then you can initiate such strategies. Now in this case, your maximum loss is not limited. The losses are unlimited in this case. Only your profits are limited, because in this case you have received a premium and you cannot make more than what you have received, right? So your profit is only limited to the extent that you have received the premium. So ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि it is a writing strategy. So obviously यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा होता है, और ज्यादा इन द सेंस इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रिस्क दैट इज देयर इन फ्यूचर्स। सो फ्यूचर्स में जितना मार्जिन लगता है यहाँ पे उतना ही मार्जिन आपको लगेगा, या थोड़ा सा शायद ज्यादा भी लगता है। सो स्लाइटली इट इज मोर, राइट। So let's say if there is a margin requirement of 1,10,000 for Nifty, and if I'm doing this sort of a straddle, ATM straddle short, then it could be 1.2 or 1.3 lakh. So this is just for your understanding, right? So, but as a concept, you can remember that it is like you have to pay the futures margin. Now, what about the Greeks in this? यहाँ पे delta, gamma, theta, इनका क्या equation है? So in this case, again the delta is going to be neutral. जब तक मतलब हम जहाँ पे स्पॉट है वहां पे ही मार्केट है, जहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस का हमने कॉल पुट बेचा है वहीं पे अगर रहेगा तो माय डेल्टा इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। सो इनिशिएशन के टाइम पे माय डेल्टा इज न्यूट्रल। थीटा इन दिस केस इज इन माय फेवर बिकॉज आई हैव सोल्ड ऑप्शन। सो जो टाइम डीके है वो हमेशा मेरे फेवर में होगा, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द वॉलेटिलिटी इज नॉट इन माय फेवर। वॉलेटिलिटी अगर बढ़ गया तो ये मेरे लिए डेट्रीमेंटल है। ऑब्वियसली जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आता जाएगा उसमें आपका क्या है कि वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होते जाता है, बिकॉज वी नो दैट वॉलेटिलिटी हैज द हाईएस्ट इम्पैक्ट व्हेन द टाइम टू एक्सपायरी इज लार्ज, when there is a lot of time to expiry, and in such a scenario if the volatility expand then it's going to hit you very badly, right? तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हम अगर इस टाइप के स्ट्रेटजीज कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी हमारे अगेंस्ट में कभी भी आ सकता है। सो अगर ड्यूरेशन लंबा है सो ऑब्वियसली वहां पे हमको प्रीमियम भी ज्यादा मिल रहे होंगे, बट वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर कवरिंग एनफ। हम एनफ प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी अगर बढ़ जाए मार्केट में, हम सोच रहे थे कि रेंज बाउंड होगा लेकिन मार्केट एक रेंज के बाहर भी अगर चला जाता है तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट कि हम कितना प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं हो कि हम ये स्ट्रेटजी एक ऐसे पीरियड में लगा रहे हैं जहां पे वॉलेटिलिटी बहुत लो। When the volatility regime is very low,
So that's when these sort of strategies are ideally not supposed to be implemented, because any which way you are not going to receive much premium. Since the IVs are low, so option prices are anyway deflated. They are not much. So the buyer is actually not paying you much money. As a seller, you are not receiving much. So it may not cover for your risk, because suddenly there could be an expansion in volatility, right? अचानक से अगर volatility अगर expand हो गया, तो जो मैंने प्रीमियम रिसीव किया है हो सकता है कि वो मेरे को कवर नहीं कर रहा है. सो इसके लिए जब लो वॉलेटिलिटी पीरियड है, वो आपको ध्यान में रखना होगा कि वहां पे अगर ये नहीं करना है, और अगर आप कर भी रहे हैं तो यू हैव टू बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग. करेक्ट. नेक्स्ट इज द शॉर्ट स्ट्रैंगल. अगेन इसमें क्या है, इसमें नाउ आई फील इन दिस स्ट्रैटेजी, लेट्स से आई फील कि नो आई एम गेटिंग अ टू टाइट रेंज एज अ ब्रेक इवन पॉइंट. I don't want this much of a profit, but I want a safety. मेरे को रेंज बड़ा चाहिए, मेरे को प्रीमियम इनफ्लो थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए. थोड़ा रेंज मेरे को बड़ा चाहिए, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है इसमें, सिंपल. जो आपका लॉन्ग स्ट्रगल था उसका जस्ट ऑपोजिट. यहाँ पे अगेन ब्रेक इवन पॉइंट इज जो आपका इनफ्लो हो रहा है, वो आप नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से माइनस करेंगे, वो होगा आपका लोअर ब्रेक इवन. और अपर ब्रेक इवन के लिए अपर आई मीन द स्ट्राइक प्राइस प्लस द जो आपका प्रीमियम है. सो उतना तक तो आप कवर्ड हो, लेकिन उसके बाहर अगर मार्केट चला गया तो आपका लॉस आ जाएगा. सो ये रेंज को अगर आपको बड़ा करना है, देन दिस इज व्हाट यू डू इन सच अ सिनेरियो. व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ चूजिंग एन एटीएम कॉल ऑप्शन टू गो शॉर्ट, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एटीएम कॉल ऑप्शन को बेच रहे थे, राइट. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम एटीएम के बदले आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट ले लेंगे, थोड़ा दूर का कॉल पुट ले लेंगे ताकि हमारा रेंज बड़ा हो जाए. तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा नोटिस करके देखें, योर रेंज, प्रॉफिटेबिलिटी रेंज ऑन द हायर साइड इज कैप्ड. दैट इज वन. सेकेंड, द बेनिफिट इज दैट कि आपका जो ब्रेक इवन का पॉइंट्स है वो वाइड हो जा रहा है, मतलब योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गोइंग टू इंक्रीज. सो इन दिस स्ट्रैटेजी कंपेयर टू दिस एंड दिस, in this one my break evens were probably too tight, but in this case my break evens are going to be wide. So even though my inflow or my return on investment will be very low or very less, but the probability of making money is going to be high. Correct. तो इस वजह से कई लोग ये भी करते हैं. बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे माई व्यू हैज टू बी करेक्ट. मेरा ये अगर रेंज बाउंड रहेगा, ये व्यू ही अगर गलत हो गया सब, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट. सो आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ओनली. सो what we do is right now we will just go and build some strategies. So कुछ हम live examples देखते हैं, right. So can we have the Excel please? Yeah, I think we are able to see some Excel payoff diagram on the screen, right. So what I'm trying to show here is basically an example. Okay. So I've just taken a date of 14th of September when markets were at 18,000 levels. So if you just can go back and see, I mean, let's say at 18,000 odd levels, if we feel that this was a big resistance and you're not sure whether you know a breakout will happen or or Nifty will go down, reverse from the resistance. So जहां पे रेजिस्टेंस आता है वहां पे हम ये जानते हैं कि या तो वहां से एक लंबा ब्रेकआउट आ सकता है, या तो वहां से एक लंबा नीचे की तरफ यू टर्न आ जाएगा, रिवर्सल नीचे की तरफ आ जाएगा. सो दिस वाज ऑन 14th of September. So what I'm going to do is I'm going to just show you you know the strategy, what it was on 14th September and what happened afterwards. So as you can see, we have chosen 18,000 strike price, call option and put option, and we are buying one lot, and this one also we are buying one lot. So the prices, if you just go back and check, this was for the expiry of 29th September. So let's say on 18th I mean 18,000 call option on 14th September was at 260, right. So you buy this option at 260, and the 18,000 put option was somewhere around 235. Okay.
So 235 is what you pay for the put option, and the expiry is 29th September. Why I did this? Somehow, let's say I felt कि on 14 September at 18,000 odd levels, either market can go to beyond 18,500, maybe go to a new high, because I see that there is a possibility of a big breakout. And if it doesn't happen, then market could completely reverse and go down, right? So how much I am paying? I am paying 260 plus 235. How much is it? 495. Correct? So 495, I mean, you can see this on the right hand side of your screen as well. So 495 is the premium outflow. This is what I'm paying. So my break even is going to be 18,000 plus minus 495, which is, as you can see, 17,505 and 18,495, right? मतलब 500 पॉइंट ऊपर नीचे, तो 500 पॉइंट मैं पे कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरा ब्रेक इवन भी 500 पॉइंट दूर ही होगा 18,000 से. तो मार्केट हैज टू आइदर गो अबव 18,500 और गो बिलो 17,500. इतना हमको क्लियर हो गया. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड एक्चुअली. सो ऑन 29th market actually closed at somewhere around this on 29th September, markets came down to 16,800 approximately. I am just giving you the numbers, right? So if markets did come down to 16,800 levels, what do you think would have been the price of the options or this strategy? Anyone? Any guesses? Yeah. So obviously the call option would have become 0, but the put option of 18,000 would simply be at 1,200 rupees. Correct? So my strategy, which I bought at 500, would have gone up to 1,200, right? So this strategy virtually ended, which I paid like 495, and if it went up to, I mean, went down till 16,800, so somewhere around these levels. So as you can see, this is where it is. So at this particular point, my strategy would have given me a profit of somewhere around how much? 700 points, right? So this is what it is. Now let's do another strategy. Let's go for a long strangle. So instead of the 18,000 call option, how about if I would have bought a 18,200 call option? एंड 18,000 के पुट के बदले में मैंने अगर 17,800 का पुट ऑप्शन लिया होता. सो माय स्पॉट इज एट 18,003 एंड अगेन आई एम ऑन लाइक 14th September, है ना? 14th September. So this is where I am, and I am again going for the 29th expiry. But here in this case, what were my option prices? यहाँ पे तो थोड़ा सा कम होगा, करेक्ट? सो लेट मी जस्ट चेक एंड आई विल टेल यू. सो द कॉल ऑप्शन ऑफ 18,200 was at 163, and the 17,800 put option was also at somewhere around 165. Okay, so 17,800 put at 165 and 18,200 call at 163. So this is at 163 and this is at 165. So I'm paying just about 330 rupees, more or less 328 to be precise, but let's keep it 330 for simplicity's sake. So in this case, if I'm paying 330 rupees, earlier I was paying how much? 500. Now I'm paying 200 rupee lesser. I'm paying only 330. I mean 170 lesser. But what is the trade-off? The trade-off is that in this case, my break-evens have moved much further away. So in earlier case, my break-even was at 18,500, and now my break-even is at 530 on the higher side. Similarly, the break-even on the lower side is 17,470, right? So there is a trade-off always, but that's what you have to calculate as well, what you want to do. So even on hindsight, even this was not a bad strategy, correct? So similarly, what would have been the the payoff of this strategy? So if market closed at on
29th, if uh, market closed at 29 September, if market closed at 16,800, then obviously this call option would have become zero, right? This would have become worthless. But my this put option would be how much? Simply equal to this minus this, which is 1,000. So this strike price minus the spot expiry. So it will become $1,000. So my strategy effectively will be at 1,000 from 330. है ना? So I'm going to be making a profit of 670 rupees. तो इस तरीके से जैसे क्या है कि अगर आपके मार्केट में अगर आपको लगता है कि देयर इज अ चांस ऑफ अ वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन या रिवर्स हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, सो आपको ये सब में एक ही चीज ध्यान में रखना है कि आप जो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब वॉलेटिलिटी लेवल पे, वो अगर बहुत ज्यादा पहले से बढ़ा हुआ है तो फिर मुश्किल है, because in that case you might be paying a premium which is already too much high. So maybe the move is already discounted, so that is what you have to also ensure, that the move is not discounted in the price. So जैसे कई बार क्या होता है कि इवेंट्स के पहले, नॉन इवेंट्स के पहले, जैसे इवेंट मतलब आई मीन देयर इज अ रिजल्ट, यू नो, देयर इज अ रिजल्ट कमिंग अप फॉर अ स्टॉक, तो कई बार हमने देखा है कि रिजल्ट तो आया और अच्छा आएगा ऐसा हमने सोचा था या खराब आएगा सोचा था और वो स्टॉक गिरा भी, लेकिन जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल हमने किया था उसमें पैसे नहीं बने, उल्टा लॉस में चला गया. व्हाई दैट हैपेंस? बिकॉज क्योंकि जब हमने इनिशिएट किया था तब उसका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा था कि उसने इस मूव को शायद पहले से ही फैक्टरिंग कर लिया था. आज मान लीजिए अगर ये जो निफ्टी का एग्जांपल ही मैं दे रहा हूं, यही अगर इन केस लेट्स से इफ मार्केट समहाउ लेट्स से इफ देयर वाज एन इवेंट एंड इफ द ऑप्शंस वेयर एट लेट्स से यही अगर 300 रुपए होता और ये मान लीजिए अगर 340 रुपए अगर या 300 एनीथिंग लाइक 320 अगर होता, तो अगर मैं यहाँ पे 600 रुपए पे कर रहा होता तो ऑब्वियसली माई व्हाट प्रॉफिट वुड हैव बीन मच लेसर, है ना? सो ये चीज है कि अगर मेरे जो जिस टाइम पे हम स्ट्रैटेजी इनिशिएट कर रहे हैं वहां पे मेरे को उस पर्टिकुलर एसेट का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लेवल क्या है वो थोड़ा हमको जानना पड़ेगा. Obviously implied volatility के ऊपर में we will be conducting sessions moving ahead, but at this point it is like fair to say that IVs are very important to be tracked, and in case IVs are too high, then you might as well skip this kind of a long strategy, and that is when probably you can also look for short strangles in case if you feel that technically also the stock is like that. In case if you feel that the stock is going to play a range bound move, and let's say you think that it is going to be near a range, I mean within a range, so in that case what you can do is you can, instead of a long strangle or a straddle, you can go for a short strangle. So let's say if I feel that nifty today is going to be, I mean currently it is at, let's say, how much, 17,100, right? So instead of buying a 17 or selling a 17,100 call put, what is the price today? I'm just taking it randomly. Nifty today is 17,100 call put, right? So 17,100 call. I'm just checking the tomorrow's expiry, 13th. Okay, so tomorrow's expiry 17,100 call option is at more or less is at 100, and the put option of 17,100 for tomorrow's expiry is again at 66. Okay, so this call option 100 and it is at, let's say, 70. That's it. Simply. Now I'm going to sell. I'm not going to buy because I feel that market abhi, this is where it is market, right? And the expiry is 13th October. Okay, so this is the situation, and spot is exactly at 17,000 more or less 130. I don't know the closing prices, but this is where the LTP was. So now in this case, what is happening here is यहाँ पे हम 17,100 का कॉल और पुट दोनों हम बेच रहे हैं, ठीक है? इसमें हमको कितना 100 और 70, 170 रुपए करीब आई एम गेटिंग द इनफ्लो. सो this is okay as long as I feel if the market is going to be within a certain range, right? Within this 150 point or 160 point or maybe a 200 point range, right? So let me just show you this way. Just in the plot for you.
16,500 and just a minute, 16,500, and this is going to be 17,600. Okay, fair enough. So in this case, obviously I don't need this much. Just a bit of quick on the axis to make the graph look good. हाँ, अभी देखिए. So this is how my payoff is. इसमें मेरा ब्रेक इवन कितना आ रहा है? 17,270 और नीचे में 16,930. Now, if I feel that tomorrow market is going to be within this range only, then maybe might as well I can short this strategy and keep a stop loss. So I am receiving how much? 170, correct? So if I feel that there is a technical possibility ki above which or below which the market can move, right? Say for example, if I feel that 17,300 is a resistance and above which I should not be short, and similarly 16,900 is a support below which I should not be long also. So in that case, maybe I can keep a stop loss according to these spot levels. Correct. So for tomorrow, maybe if it is, let's say, if it goes to 16,900 and breaks, and that's where I feel that I should close my position. 16,900 के नीचे अगर मेरे को लगता है कि मेरे सौदे काट देने चाहिए, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 170 रुपए का ऑप्शन अभी हम प्रीमियम हमने रिसीव किया है, वी कैन maybe keep a stop loss of 250 or maybe at 230 rupees, right? So that is also possible. That is also a possibility that we can do, because especially when you are shorting options, you have to be very very careful. There has to be a definitely some amount of risk management that you need to definitely ensure. अगर आपने ऐसे खुला छोड़ दिया तो आप हो सकता है कि 170 रुपए आज लेंगे, कल लेंगे, परसों लेते रहेंगे, 2-3 एक्सपायरी, 4 एक्सपायरी, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, बट एक एक्सपायरी ऐसा आएगा जहां पे ऐसा होगा कि आपने स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं किया एंड मार्केट अचानक से उस एक्सपायरी में बहुत लंबा गिर गया या बढ़ गया. So there going to be a huge move on any given expiry, and this keeps on happening. I mean, out of let's say how much 52 expiries in a year, I would say 4 to 5 expiries is where it's very difficult to manage. If we don't have a stop loss, so that's why it is important to keep some amount of risk management in place in any strategy that you, and in options, especially this sort of strategies, definitely the risk management has to be very strong. Okay. So that you have to decide what is the right level where you feel you should not be remaining long or short, because effectively इसमें क्या होता है कि if the market moves in one direction, you are going to be exposed on the delta. या तो आप delta short हो जाओगे या तो long हो जाओगे, right? So that's what you have to keep in mind. Okay, now let's say in this situation only, if I wanted a bit more safety, so if I feel that I don't care, I will do a 17,300 call option. I will sell, and on the lower strike price, I will go another, let's say, 100 points lower or 200 points lower. So let's say now the spot is 130. So here I have gone somewhere around 200 points higher, and in this case, if I want to go 200 points lower, so it will be 16,900 put option, right? So can anyone give me the prices, please? It will be quick, otherwise I'm just going to check it. Just a minute. 16,900 put option for tomorrow's expiry is at 16 rupees, and the other one is 17,300 call option. So 17,300 call option, just a minute. Yes, it is at 19. Okay, so 19 and 16. Yeah. So I'm selling a call option at 19 and I'm selling a put option at 16 only. So how much I'm receiving? I'm receiving 35 rupees. Now you see my break-even points are much wider or slightly more wide. Correct. So in this case, I cannot make more than 35 rupees, but this is a short
short strangle. So approximately this might require somewhere around 1,20,000 if I'm doing it on Nifty. Okay. So now this is where it is. So if I'm doing one lot, so I might be making, let's say, the whole amount, 35 rupees. And that would end up into something around, let's say, even if it is 40 rupees, then also it is like 2,000 rupees. So I'm just about making, 2,000 rupees on an investment of 1.2 lakh. So which is not bad if you think of it, right? And the other thing is that in this case, the possibility of making this much of money is slightly higher, because as you can see, the flatness of this curve is pretty much wide. It has a wide range, right, as compared to the short straddle. This has a flat base, at which I'm going to be making this 35 rupees. I cannot make more than 35, but then yes, within this range, which is what, the 17,300 and 16,900. So as long as market remains within this range, I'm going to be making 35 rupees. My break-even points are even 35 points higher and lower from these two strike prices. So on the higher side, my break-even is 17,335, because my loss will start above 17,300. But also, since I have received 35 in the first hand only, so my break-even will shift to 13,000. I mean 17,335. Lower side, again you subtract 35 rupees lower, so that comes to 16,865, right? So this is the range within which I'm going to be at profit, or at least in break even. So here, why people do such strategies? Because it is comparatively, in a way, I would say, uh, a zero brainer, because all that you have to understand is that what could be the possible range, right? And in case if you have a good risk management in place, if you are able to identify the points where you need to come out of the strategy. So let's say how it goes is, if I'm selling a strategy at 35, हमने 35 रुपीज में इसको बेच तो दिया, तो स्ट्रैंगल हमको इन्फ्लो दे रहा है, शॉर्ट स्ट्रैंगल है, इन्फ्लो आ रहा है, लेकिन ये 35 रुपए के सामने में हम 35 रुपए से ज्यादा तो कमा नहीं सकते हैं, राइट? तो एटलीस्ट हम 35 से ज्यादा स्टॉप लॉस रखने का भी कोई मतलब नहीं है. So we cannot risk more than what we are supposed to gain. So let's say a good way to keep a stop loss as a thumb rule, I can say, is that just keep a stop loss of just about 80% of the money that you are going to receive. So let's say if you are expecting a 30 rupee profit from this strategy, so you can keep a stop loss of 25 rupee or 30 rupee at max on the higher side. So my stop loss will be something around 55 to 60 rupees. That's it. So this is what again, like if you just want a simple formula how to keep a stop loss, so this is one of the things that can be done. This is what a lot of people do, which is not bad. Okay, so what else? I'm able to see a lot of questions flowing in. Okay, so now straddle क्या है, strangle क्या है, इसको याद कैसे रखें, ठीक है? तो दोनों नाम में काफी कंफ्यूजन होता है, तो दोनों में से कोई एक नाम को आप याद रखिए, है ना? देखिए, दोनों में ही आप कॉल पुट खरीदेंगे या तो बेचेंगे, करेक्ट? सवाल ये है कि आपको सेम स्ट्राइक प्राइस लेना है या अलग लेना है. तो स्ट्रैंगल में एंगल बनता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्ट्रैंगल में एंगल बनता है, तो एंगल इज लाइक वो आपका डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस वाला होगा. तो strangle is something where you are having two different strike prices, right? And obviously the straddle will be the one which has the same strike price. Okay, so I think we can go back to the slide. This is it for the Excel, and we can also go for the question answers. I mean, I'm able to see a lot of questions coming in already. Yeah, I think we are good to go for the question answer session. Okay, so for short straddle, Mr. Krishna Charan is asking for short straddle, what can be ideal stop loss? So for short straddle and strangle, like as I said,
you cannot or should not risk more than what you are supposed to gain. So in both the cases when you are shorting, जब आप शॉर्ट कर रहे हैं स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल हो, आपका जो प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हैं उससे ज्यादा तो आप प्रॉफिट कर नहीं सकते हैं. तो योर स्टॉप लॉस या तो आप टेक्निकल स्टॉप लॉस स्पॉट के हिसाब से आप कैलकुलेट करके रखिए, या तो ऐसे थंब रूल अगर आप ऑप्शन के प्राइस से ही करना चाहते हैं तो मे बी 70%, 60%, 80% एट मैक्स, उससे ज्यादा आप क्या स्टॉप लॉस रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रिसीविंग अ प्रीमियम ऑफ 100 rupees by selling both the call and put, your stop loss should not be more than 70 rupees, right? ऐसे मतलब this is how it is, I would say. I mean, but the better way to do is that you look at the spot काइंड ऑफ थिंग. आप स्पॉट का एनालिसिस अच्छे से कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से बड़ा रेंज मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि जब आप शॉर्ट स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल में है, शॉर्ट में है, तो आपका थ्योरी या अजम्पशन यही है कि कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा. बट टेक्निकली अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी बड़ा मूवमेंट आ सकता है, सो देन यू गॉट टू टेक अ कॉल, राइट. अगर स्टॉप लॉस नहीं भी है तो भी आपको सौदे काट देने चाहिए, इवन इफ यू आर एट अ लॉस और अ प्रॉफिट, व्हाटएवर इट इज. फॉर इंट्राडे, okay, for intraday again, uh, आई मीन देर आर वेरियस और मेनी वेज. इंट्राडे के लिए कैसे कर सकते हैं? इंट्राडे के लिए आइदर यू कैन कैलकुलेट अ रेंज फॉर द एसेट दैट यू आर ट्राइंग टू ट्रेड. लेट्स से इफ यू आर डूइंग अ बैंक निफ्टी or a nifty, okay, and you got to find what is the average range, and today whether that range is expected to hold. So you decide based on that first what strike price you need to sell, because one way is that you sell the ATM. That is simple, right? But if you want a bit more safety, you are willing to let go some bit of profit, but you want safety and the probability to be higher of making money. So in that case, you go for the strangle, which is the wide one, right? So in that case, you are first of all not going to be losing any money within that band as long as you are within that band. So that band, if you have an understanding based on whatever method you feel is right, then you can choose the the strike prices. And then in case if that seems to be violating, then that's when you execute your stop loss. I think this would answer your query. Okay, now the next question is high time value is equal to high implied volatility, and high IV means ideal for sellers. Mr. Bose, yes, in a way, you can say that is right. High IV is ideal for sellers, but the IV can also be higher. But of course, to answer your question, I would choose a easier way. Low IV is not the best of the situations to go short, right? Okay, and okay, and a lot of questions going in. We are selling ATM put and call option. Do we need to check on the delta first, and which one should we buy first, ATM put or call for long straddle? See, practically for long straddle, whether you should initiate the call first or the put first, the common sense says that if really markets are like very volatile, so when you are initiating the trade, it depends on the situation. So if markets are going to be very volatile, if markets are like moving wildly, so first of all it is very difficult to catch hold of the both the options together manually, right? So there will be some amount of slippage if you are executing the trades manually. Now, even then, the other thing is that the spot price may not be exactly equal to the strike price that I'm choosing, because we don't have exact strike prices always, right? So there is always going to be some amount of delta exposure in both the call, either the call or the put. For example, if market is trading at 17,130 right now, so 17,100 call option is obviously slightly more in the money as compared to the 17,000 put option. Now, if you go for the 17,150 calls and puts, then maybe again the same thing applies, right? So in such a scenario, the one which has the higher delta should be executed later. The one which has the lower delta should be executed first, right? Because the one with the higher delta, you can keep a price at your wish.
right? You can keep an price that you wish to execute the trade. So in case if you get your price, the other option is any which way not moving, correct? So you can easily execute the other leg. So that is what I would do, because if we think it practically, then let's say there is one option which is not moving, the other one is moving very fast, and if I execute the one which is easier to execute first, then the other one I cannot be sure which price will I get, correct? So the price either could come at a very good price in my favor, or it could just go away from the ideal price and I could end up into a huge slippage. So it is better that the one which is having the higher delta or volatility, that should be executed first. Okay, and next question, Mr. Srivastav, is it possible to execute these strategies in Kotak Securities? Oh yes, of course. Is Iron Condor a better way to of managing losses in short strangle? See, Iron Condor is a bit different. I mean, of course, yes. Iron Condor is nothing but an extension of your short strangle, where you are again like buying a protective call and put again very far out of. What you are saying is right. If you feel that there is a necessity to even protect your short strangles, you can do that, right? You can go for iron condors, so that ensures that we have a hard stop loss in place. So yes, you are right. Okay, and there are more questions. Mr. Mishra, Anurag Mishra, does okay? This one is interesting question. Does Kotak stock trading trader app has a strategy builder? Yes, we do have launched this module in the mobile app. You can go for the mobile application and you can build your own strategies. You can, you know, try out new things. You can see the payoff diagrams before expiry. How will it be? And you can do all sort of experimentation and your own research there. So does option selling has higher probability of profit? Well, it depends. By default, if you ask me mathematically, option selling has a higher probability of profit. It depends, but again, I mean, what is it going to gain, and how much I can lose when it goes wrong. So that equation has to be also thought of. So probability, when you say, so probability of what? Making just a small bit of money. So let's say the overall game of making money is not only about probability of how many profitable trades I make. It is also about how much do I lose when I lose. So even if I have a 90% strike rate, let's say I don't go wrong on 9 out of 10 cases, and in the 9 out of 10 cases I make some 50 rupees by selling options, 9 out of 10 cases, right? So it might seem to be very good, but the next question that one should be asking is that what about the rest of the 10% when I do not make money and I lose money? So if I lose 500 rupees each on those 10% of the trades, then there is no point in making that 90% strike rate and making that 50 rupees. So your question is a bit tricky. This cannot be answered in isolation. Is what I feel, that whether just by always doing us selling options, do we really end up making money or not? If that is your question, like probability of profit means, as a strategy, the strategy has to be profitable over a period of time, not one single trade, correct? So the strategy, again, it will have a probability of, every trade will have a probability of being right and wrong, and the probability of going wrong as well. So when I lose, that taken into consideration with the one when I make money. So both things add together. I hope this answers your question. Sir, which strategy is best for any market without studying market, simply daily use in the morning? Uh, I am so sorry, Mr. Sanjay. I mean, uh, even I mean, I don't think so. There is any profession which does not require any skill. So I don't think that there is any strategy in the
market in options or futures or even simple equities, whatever be it. There is no such strategy where you do not require any study or understanding. If had that been the case, then I mean, then everybody would have left everything and would have done this, right? Okay. Um, okay. So Neo app, yes, they have it, and okay. Now again, I'm getting one more interesting question. For intraday, are these strategies good? Yes, intraday. I mean, you can use these strategies, uh, but one has to be very careful about the timing that you are executing. So especially if you think that there is a dullness in the market, right? So there is a dull period going on, and now you think that there could be a sudden move, because at times this happens. ये कई बार होता है कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, एकदम से मार्केट खड़ा है और अचानक से जो है 2:30 and some movement, something comes in and the market just moves suddenly. So if you are expecting one of those days, then yes, you can go for a long straddle itself. But in case uh, you know that is very rare, generally वो बहुत कम होता है, हमको याद रहता है क्योंकि वो रिमेम्बरल ऐसे होते हैं, बट जनरली उस टाइप का सिचुएशन बहुत कम होगा. तो कई बार यही है कि अगर मार्केट एकदम से टाइट रेंज में है तो यही एक ट्रेंड चलता रहता है सारा दिन कि मार्केट वो सारा दिन ही it will just keep on chop around and be in a range. So in those situations we can initiate a bit of short strangles. So that is also is what can be done. So I think we are running out of time, but okay, what is this is the last question I'm going to take. What is a high IV and a low IV in index options? Okay, so uh, IVs in general, I mean, as a rule, since we are discussing IVs in brief, IVs in absolute numbers they really don't make any sense, right? Because IVs they keep on changing. Right now, India VIX, that is a good proxy. I mean, to understand what is the volatility levels in the market. So India VIX, let's say, is at 20. Any typical ATM IV of Nifty option will be somewhere around right now. I don't think it is going to be beyond 18 or 22, right? I mean, this is the range that it has been following. Any ATM option, generally it is 18% or 22%. This is the range. Now, so when this average 18 or 22% seems to be a good range, I mean, good center point or the average, then any IV something like a 25 or a 30 will seem to be high, correct? So how do we measure this? So the only way out is to express IV in terms of a percentile. So percentile का मतलब ये है कि आप इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये है कि 6 महीने का जो भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चल रहा है, राइट, उस अनलाइन का, अगर निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, तो 6 महीने में जो भी आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चल रहा है, क्योंकि देखिए हर दिन एक एटीएम ऑप्शन है, उसका एक आईवी है, राइट? Every day there is an ATM option and it has a particular IV. So if I record all those IVs for the last 6 months and then if I sort them in an order, and in that list of IVs of the last 6 months, now if today's IV if I pick or any IV if I pick, I can easily say what is the percentile. So any IV which is at least 75% 75 percentile or 80 percentile, above which we can consider it to be relatively higher. Yes. Okay. So okay. So one last question, sir. I mean, Mr. Chaturvedi Utkarsh Chaturvedi, please go ahead. Uh, is there any role of PCR in option movement? Role of PCR in option movement of, I mean, it is like an indirect thing. See how it goes is PCR.
is what? The ratio of calls and puts. So that helps you to understand the psychology and the sentiment in the market, right? So if that is what you can use, I mean, the PCR ratio, if you can use to understand the sentiment in the market, then that can help as an indicator to gauge which way the option price will go. But if in effect the option prices are not, I mean, the PCR ratio is not dependent on the price of the option, correct? Because PCR, if it is an open interest based PCR, then it is just the number of contracts open. So PCR ratio is different. It has got nothing to do with the price of the option. But yes, PCR can be used to predict the spot or understand the spot, and that in effect can have an impact on the price. I mean, from a prediction point of view, but directly, no, it does not. Like IV has a direct impact. I mean, volatility level has a direct impact. Time has a direct impact, right? Spot has a direct impact on the option price. Risk-free rate has a direct impact on the price. Dividends have a direct impact on the price. So, but this PCR does not, because that's basically open interest. How can we find historical IVs? I mean, we you can use our platform. We have a lot of derivative tools, analytics, and there is a platform called TradeSmart which we have. So maybe you can get in touch with the customer service, and they can. I mean, I'm sure that they will be able to help you out on this. But yes, we have a lot of tools for derivative analytics and all that. Okay, so I think uh, with this, I would want to call it a day, and uh, it has been wonderful. I mean, to be able to interact, and to conclude my session, I wish everyone a great, successful World Investor Week. We are celebrating from 10th of October to 16th of October 2022. It is a global campaign organized by IOSCO, International Organization of Securities Commission, and SEBI. And it will be an excellent opportunity to learn about various efforts of education, I mean, efforts to educate and protect investors around the world, right? So if you wish to explore more about it, please visit the websites. And thank you so much for your time. And in the next session, probably we will be talking about the condors and I mean, lot more, right? So see you. Thank you again. Thanks so much.